हाय, मेरा नाम नीमो है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं टू सम प्रॉब्लम, जो कि मोस्ट पॉपुलर लीड कोड प्रॉब्लम्स में से एक है। एक एग्जांपल लेते हैं इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारे पास एक अरे है नम्स, जिसके एलिमेंट्स है 2, 7, 11 एंड 15 और हमें टारगेट दिया हुआ है 9। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है कि इस अरे में किसी दो एलिमेंट्स का सम 9 होना चाहिए। So in order to solve this problem, in a simple way, we will take a for loop I is equal to 0 से लेके n-1 तक. So let's first write the indices. तो इन एलिमेंट्स के indices होंगे 0, 1, 2, 3. तो हम for loop चला रहे हैं 0 से लेके n-1 तक. जो लास्ट एलिमेंट हमारा है वो n होगा. तो फर्स्ट वाला for loop 0 से लेके n-1 तक चलेगा. सेकेंड वाला for loop j के लिए चलेगा i+1, जो भी हमारा i है उसका नेक्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक. i+1 से लेके लास्ट एलिमेंट तक. सो फॉर द फर्स्ट आइटरेशन हमारा i का वैल्यू 0 है, सो द फर्स्ट एलिमेंट विल बी 2 एंड द सेकेंड एलिमेंट सेकेंड फॉर लूप से विल बी 7 विच इज इक्वल टू 9. सो यहीं पर हमें हमारा आंसर मिल जाता है एंड वी विल रिटर्न the positions of these two elements, that is I and J. So let's see how we solve this in code. First we will store the length of our list. उसके बाद हम for loop चलाएंगे for I in range n-1 तक और नेक्स्ट for loop चलाएंगे for j in range i+1 से लेके n तक. Now we will have to check the sum of the two elements, that is if nums of I plus nums of j is equal to target, then we will return I and j. So let's see if this gives us the desired result. Yes, submit करते हैं. Yes, passed. For more such videos, subscribe to Coding Nemo. Like, comment and share this video with your friends. And let me know in the comment section which other solutions you guys want to check out. और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं DBMS, कॉन्सेप्ट्स, OS, कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कॉन्सेप्ट्स पे. So stay tuned and see you in the next video.